we are going to talk about sciatic nerve. Sciatic nerve is the thickest nerve in the body. It is so thick that an artery has been provided inside it to provide blood supply to it. So if you cut the sciatic nerve, you will find one artery in a substance of the sciatic nerve, which is a branch of inferior gluteal artery, and therefore this nerve is called as pregnant nerve, as if a mother carrying a baby, a nerve carrying an artery within itself. Pregnant nerve, thickest nerve in the body. The sciatic nerve has two parts in it. Actually, it's not a single nerve. There is a tibial nerve and common peroneal nerve, which at the upper angle of popliteal fossa, they separate. After that, they are called tibial nerve and common peroneal nerve. Above that, they are called tibial part of sciatic nerve and common peroneal part of sciatic nerve. So up to this point, we will be calling them tibial part and common peroneal part. Root value of the sciatic nerve is L4, L5, S1, S2, S3. This is what students from other medical colleges tell in exam, and examiners also give marks. Our college, if you say like this, you will not get marks, because there are two root values, tibial part and common peroneal part. Then some medical colleges students tell this and they top the exam. Our colleges, if you tell this, you may just pass. Why? Because, listen to this carefully, tibial part supplies all these muscles which are flexors. Okay? Firstly, before anything, sciatic nerve is a branch of sacral plexus. Femoral nerve was a branch of lumbar plexus. Obturator nerve was a branch of lumbar plexus. Now we are talking about sacral plexus. Tibial nerve is from the ventral divisions of the anterior primary rami, of L4, L5, S1, S2. While common peroneal is from the dorsal divisions, okay, of the anterior primary rami of L4, L5, S1, S2. Asata, because tibial is going to supply all the flexors. Common peroneal क्या करता है? Common peroneal का एक branch है. Understand this concept. Everybody look here. तो शेवटच्या बेंचवरचा मुलगा उठ उभा राहा. तुझ्या बाजूचा. काय नाव तुझं? हाँ. आजान. रजान. Okay. So Razan. Common peroneal gives a branch called as deep peroneal nerve, which from posterior side comes here and supplies these muscles. Now these muscles cause this action. कौन सा action है ये? Dorsiflexion, but this is extension. Dorsiflexion or extension. Because plantar flexion is like this. Plantar flexion is like this, and dorsiflexion is actually extension. So common peroneal is supplying the extensor muscles of the ankle. It also supplies the everters, which is like abduction. So मैंने आपको बताया था कि dorsal division supply abductors and extensors, and therefore common peroneal is from dorsal divisions. From dorsal divisions. Tibial is from ventral divisions. Okay? That girl, green t-shirt. Why tibial is from ventral divisions? Because it supplies the flexors. The ventral division supply flexors and adductors. Sit down. Clear? Now, a short course. Sciatic nerve. Yeah. Short course. तो लिहिल्यावर कॉन्सन्ट्रेट करते थोडं इकडं तिकडं झालं चालेल. शॉर्ट कोर्स हे दिसतंय ना. शॉर्ट कोर्स is that
द कोर्स स्टार्ट्स इन पेल्विस. एकदम मतलब एग्जाम में ना आपको कुछ भी याद नहीं आ रहे हैं, अभी क्या करने का, कुछ तो लिखना पड़ेगा. कोर्स स्टार्ट्स इन पेल्विस. ये यहाँ पे है, in front of piriformis. Then it leaves the pelvis by passing through greater sciatic notch, enters gluteal region, enters the gluteal region. That means it will come like this in the gluteal region. Gluteal region. Okay? ये थोड़ा सा और लैटरली होना चाहिए था. Comes to the gluteal region. यहाँ पे ऐसा अपना ग्रेटर साइटिक नॉच, बराबर. So comes out below the piriformis, बराबर है कि नहीं? And it's anterior to piriformis. तो जब पीछे से देखेंगे तो it will appear as if it is coming below the deep to piriformis. Deep to piriformis, but anatomical position में क्या है? It is anterior to piriformis. पीछे से देखेंगे तो it is deep to piriformis, but superficial to all these muscles. रजान से तो तुझं नाव काय? जोरात बोलायचं रे, जोरात बोलायचं. जोरात. तो दंगा करताना सापड मला एक दिवस कॅम्पस मध्ये, मी तुला सांगतो. यही वो लोग रहते थे, तेरे आवाज आने दो भाई, ऐसे पीछे से बोलते हैं आपके फेस्टिवल पे, और इधर नाम के एकदम 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 बस खाली. तो कॉलेज फेस्टिवल में मैं तेरे को देखेगा, तो चिल्ला उधर, एकदम सडनली तेरे को बाजू में देखेगा मैं आ गया. ओके, वेयर आर वी? Then it lies on these muscles. Okay, then it leaves the gluteal region. It leaves the gluteal region. So it leaves the pelvis by passing through. Leaves the pelvic, leaves the gluteal region by passing between ischial tuberosity and greater trochanter. By passing between ischial tuberosity and greater trochanter. And it enters the back of the thigh. It enters the back of the thigh. देखो back of the thigh पे गए. Okay, back of the thigh. Where it is lying on adductor magnus. And ये इसको क्रॉस कर रहा है. ये थोड़ा सा और ऊपर रहता है. मैंने I'll drop out some other time because I was teaching these muscles first. Now in that only I have added sciatic. And then at the superior angle, of popliteal fossa, it divides and ends. तो यहाँ पे ऐसे वो divide करेगा. Superior angle of popliteal fossa, it divides. Clear? Into tibial and common pyramid. It divides at the superior angle of popliteal fossa into tibial and common pyramid. Okay, so of course I'll repeat again. Starts in the pelvis. शेवटचा मुलगा उभा राहा. What is, which muscle is this? तुझ्या पुढचा मुलगा लवकर. Which muscle is this? बाजूचा मुलगा. जोरात बोलायचं. बाजूचा मुलगा कृष्णा. कोण आहे? कृष्णा किधर? तू हाँ उभा रहा. कृष्णा. Which is this muscle? Piriformis. This muscle is piriformis. So Krishna, what is the relation of sciatic nerve to piriformis? बाजूचा मुलगा. What is the relation? बाजूचा मुलगा. बाजू येतंय का कोणाला? रजा खड़े रहो. अभी तो ऐसा वो देख रहा कि भाई एक बार तो मैं खड़ा हो गया. तो तू नाव काय दे? तू हाँ काय रिलेशन सांग. पुढची रांग फक्त उभं राहा तुम्ही. हाँ बोला. हाँ चला उभं राहा. हाँ तू पुढे बोल. काय
ऊपर से नहीं, ये क्या ऐसा लिखेगा क्या एग्जाम में ऊपर से जाता है? हाँ, सगळे उभं राहा. काय काय म्हणलं ऐकू येत नाही मला. बाजू 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 पुढची ना. हा, नुसतं उभं राहायचं काम करायचं तुम्ही, पटपट पटपट. एंटीरियर टू पायरिफॉर्मिस. पायरिफॉर्मिस, ताली बजाओ उसके लिए. क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज चौहान. हाँ, कदम, पृथ्वीराज कदम. ओके, तुम बस खाली. सो अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि सेक्रम ऐसा है, वो सेक्रम से दोनों साइड से ऐसे ऐसे पायरिफॉर्मिस जा रहा है. अगर पायरिफॉर्मिस ऐसा है तो उसके आगे साइटिक नर्व, तो इट इज एंटीरियर टू पायरिफॉर्मिस, ये साइटिक नर्व. बट जब डिसेक्शन में आप जाओगे तो आप पीछे से डिसेक्ट करोगे, तो व्हाट विल बी द रिलेशन? इट विल बी डीप टू पायरिफॉर्मिस. जो पीछे से देखोगे तो क्या लगेगा? डीप टू पायरिफॉर्मिस. बट एनाटॉमिकली व्हाट यू शुड से, इट इज एंटीरियर टू पायरिफॉर्मिस. हाउ डज पायरिफॉर्मिस लीव द pelvis? By passing through. So similarly sciatic nerve also passes through. तो यहाँ पे देखो पायरिफॉर्मिस आ रहा है और उसी के डीप और एंटीरियर क्या आ रहा है? साइटिक. इट एंटर्स द ग्लूटियल रीजन. तो ग्लूटियल रीजन में उसके रिलेशन क्या है? एंटीरियर रिलेशन, दिस फोर मसल्स, दिस फोर मसल्स आर डीप और एंटीरियर रिलेशन. और सुपरफिशियल रिलेशन क्या रहेगा? ग्लूटियस मैक्सिमस. ग्लूटियस मैक्सिमस. देन इट लीव्स द ग्लूटियल रीजन बाय पासिंग बिटवीन एनीबॉडी ischial tuberosity and greater trochanter. Ischial tuberosity and greater trochanter. And then where does it enter? Back of thigh. In back of thigh, what is there anteriorly or deep? Adductor magnus. What crosses it superficially? Biceps femoris. BF. आपका कोई BF है क्या? है, दो है, एक ये साइड पे, एक ये साइड पे. यही अभी हमारा लाइफ है, याद रखो गर्ल्स. क्या है? BF मतलब बात है, biceps femoris. So that is what superficial to sciatic nerve. Deep is adductor magnus. On the medial side is semimembranosus, semitendinosus. Lateral side is biceps. So lateral biceps femoris initially posterior और superficial. Posterior है ना, और superficial anatomical position में posterior, and then lateral. And then it goes into upper angle of popliteal fossa and divides into tibial and common peroneal. Branches given by it are branch to the hip joint, articular branch to the hip joint, and branch to semimembranosus, semitendinosus, tibial part supplies semimembranosus, your BF, short head and adductor magnus. Short head of biceps femoris is supplied by common peroneal. Short head of biceps femoris is not a hamstring. It is supplied by common peroneal because hamstrings के चार common characteristics है. They take origin from tibial tuberosity. They get inserted on one of the bone of the leg. They are flexors of the knee, extensors of the hip, and they are supplied by tibial part of sciatic nerve. Therefore, short head is not a hamstring because it is not supplied by tibial part of sciatic nerve. Okay, so applied anatomy of sciatic nerve. Sciatic nerve whenever compressed, और यहाँ पे L4, L5 पे कुछ डिस्क प्रोलैप्स होता है, पर्सन गेट sciatica, और वो यहाँ से पेन चालू होता है. पेशेंट ऐसे इधर से दुखता है और फिर इधर, फिर और इधर, और फिर इधर, फिर इधर, इधर तक जाता है. Sometimes he may just come saying pain इधर. I had developed once sciatica. मुझे इधर ऐसा पेन होता था ग्लूटियल रीजन में. मुझे लगा मेरा हिप जॉइंट खत्म, गया खत्म. और बट बाद में मैं जब ऑर्थो के पास गया, बोला तुम्हारा हिप जॉइंट तो प्रॉपर है, मे बी सम साइटिक नर्व कॉम्प्रेस हो रहा है. सो आई did all those exercises and I came out of it fortunately.
But then you may come across a patient जो बोला इधर दुख रहा है, सब में से कि इधर दुख रहा है, पीछे की साइड पे. You may keep on investigating knee joint, but actually problem is sciatic nerve. I have seen patients इधर दुख रहा है, फक्त इधर, दुसरीकडे कुठे नाही. That is sciatic nerve. So any pain, it may be shooting pain, it may be just restricted to some area. Sciatica. Thank you.